Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. चलिए अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट स्टिल हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. Still it's a scalar quantity because it follows simple algebraic addition. Suppose if I give you a current of 2 ampere and a current of 3 ampere and I'll ask you what is the total current. So total current is 2 plus 3 is equal to 5 ampere. It doesn't follow vector law of addition. Got it, Siddharth? So current having a vector, having a direction and magnitude, still it follows simple algebraic addition. So we call current as a scalar quantity. It's not a vector quantity. Then we have this current density. This current density, this is a vector quantity. It is a vector quantity. Sometimes vector quantity are more comfortable to work with. Sometimes scalar quantity are more comfortable to work with, depending on the calculations. So we introduce a new quantity which is called as current density, and this is defined as it is the current flowing per unit normal area. So what I mean by this, suppose we have a wire. We have a wire like this. Fine, Siddharth. We have a wire like this, and the area of this wire, cross section area of this wire is A. And say suppose I current is entering this wire. So we define a vector quantity J, whose magnitude is given as I divided by A. That is current flowing per unit normal area. Is it fine? If I put a vector sign here, J, so here I'll put a unit vector A. That means J is in the direction of vector A, area vector. And do you know what is the direction of area vector? It is always perpendicular to surface. Area vector is perpendicular to surface. In the last chapter I told you. So current flowing per unit normal area is called as current density. But what we mean by normal here? There is a word normal. Perpendicular, great. So if I have an area like this, and let's say current is flowing like this, and let's say this angle is theta. So we only take the area which is perpendicular. Right. So we will not take, suppose this area is A, so we will not take this area because this is not perpendicular to current. We have to take the perpendicular area. That means here we have to take this area. So if this area is A, this area will be A cos theta. Got this? So here the current density will be I divided by A cos theta. Fine. So we sometimes also write I is equal to J dot A because this is JA cos theta. JA cos theta. So I can write I as J dot A, dot product of current density and area vector. So here the area vector was in this direction. So I took this as unit vector here because J will also be in the same direction. I'll make it simple. This is confusing you. I'll write here J is in the direction of flow of positive charge, and the direction in which positive charge is flowing, that is the direction of current. So J is in the direction of current. Got this? This will help you. Magnitude of J is I by A. Direction of J is, this is magnitude because vector has magnitude and direction. Also, one thing I like to tell you here, that if J is variable, or area is variable, इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल होगा तो I will be J dot dA, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा.
ठीक है, यदि कुछ भी वेरिएबल हुआ जे या एरिया तो हम फिर जे डॉट ए नहीं करेंगे, फिर हम जे डॉट डी ए इंटीग्रल करेंगे। अब यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ वायर मेड अप ऑफ एन अलॉय ड्राइव्स अ करंट विद द करंट डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, where r is the distance of the point from the axis. If r be the radius of the wire, then the total current density at any cross section of the wire. तो बता दे रहा हूं मैं क्या है। ये कह रहा है कि एक हमारे पास वायर है इस तरह से, इस वायर का जो रेडियस है वो r है, ये दे रखा है। कह रहा है कि इसमें जो करंट डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम इट्स एक्सिस। ये जो है दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस। एक्सिस से जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे, लेट्स से ये डिस्टेंस r, कोई भी एक पॉइंट p का, तो बेसिकली j इज गिवन एज 3 + 2r और r का जो वैल्यू होगा वो 0 से कैपिटल R के बीच में होगा। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो j चेंज होगा। सो वी हैव बीन आस्क्ड हियर टू फाइंड आउट द टोटल करंट, I निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि J वेरिएबल है, J इज अ वेरिएबल, J कांस्टेंट नहीं है, एरिया के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि जब भी इंटीग्रेशन होगा सर्कल का, जब भी सर्कल पे इंटीग्रेशन करना होगा आपको, तो आपको एक छोटा सा रिंग लेना होगा। लेट्स से इस रिंग का रेडियस r है और इस रिंग का जो थिकनेस है वो dr है। तो इस रिंग का जो एरिया होगा dA वो होगा 2 pi r dr, ये बताया था आपको। तो हमारे पास j डॉट dA का हमें इंटीग्रेशन करना है I पता करने के लिए। ओके, तो j जो यहाँ पे होगा वो 3 + 2r होगा और एरिया जो होगा वो होगा 2 pi r dr, इसका इंटीग्रेशन। तो जब भी किसी सर्कल के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको छोटा सा एरिया चाहिए होगा, तो आप ये मानेंगे कि वो सर्कल लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन रिंग से बना हुआ है और उस रिंग का एरिया 2 pi r dr होता है। दिस वी डिड इन इलेक्ट्रोस्टैट, मैंने बहुत धीरे धीरे किया था और मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन करना होगा तो आप उसे रिंग मान के फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो होगा 0 से कैपिटल R के बीच इंटीग्रेट होगा, क्योंकि स्मॉल r का वैल्यू 0 से कैपिटल R के बीच में है। So this will be like 3 × 2 6 pi r dr plus 3 × 2 6 pi r square dr from 0 to capital R, 0 to capital R. तो हमें यहाँ पे आता है 6 pi r square by 2 r cube by 3. So this will be, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम r square को बाहर निकालेंगे, 6 pi r square 1/2 plus r by 3. This will be the answer to this one.